वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम देख रहे हैं मैनेजिंग वॉल टोकन सॉल्यूशन। लैब को स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी एंड गूगल क्लाउड कंसोल को लॉन्च कर दिया है। क्लाउड कंसोल लॉन्च करने के बाद तुम लोग क्लाउड शेल एक्टिवेट कर देना। क्लाउड शेल एक्टिवेट करने के बाद तुम लोग आ जाना टास्क नंबर 1 पे। टास्क नंबर 1 में कॉपी कर लो पहली कमांड, यहाँ पर आकर के सिंपली पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। सेम कॉपी कर दो सेकंड कमांड, copy and paste, hit enter. Same for the third command, just copy and इसको जो है कुछ just hit enter। इसको जो है कुछ 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं, तो वेट करो कंप्लीट होने। तो ये जो है सक्सेसफुली हो चुकी है, जो हम लोगों ने कॉपी कर रही थी थर्ड कमांड, जस्ट क्लिक एंड एंटर। इसको भी जो है कुछ 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं, तो कंप्लीट होने का वेट करो। Now come back over here, verify installations that can be negligible. Just start the server, copy and paste and just hit enter. Come back. Here you will be have to just copy, have to open into a new tab, and till now just quickly run and this generally paste. Now hit enter. Just save this particular vault root token. Just copy this particular root token with you and just paste into the notepad. Once you are done with that, quickly come back to the second part. Now just go scroll to the task number 3 and you have to look for the apply token. For the apply token, you don't need to do this all these particular steps. Just scroll down, scroll, just come back, come back over here. Yeah, from here you have to start applying doing the labs. Now scroll down, you have to just unset the value token, just copy and just paste and just hit the enter. Come back again, you have to just uproll the role, just copy and just paste. Okay, now you have to just write this kinds of particular files, just copy and paste, just hit enter. Copy the fourth command and just simply paste, hit enter. Copy the fifth command, just copy and paste, hit enter. Again come back, copy the sixth command, just paste and hit enter. Come back to seventh one, what we have got the token. Again come back to the notepad. Let me quickly paste. We have got the tokens here over here. Just copy this particular token and just replace with the token. Just paste, control all, control this, and just quickly come over here and just quickly paste this particular token. Once you hit the tokens, you will be getting the bad request because we have, I guess, something missed. There is a FDDY, Y is also there. So let me again quickly copy and quickly run this particular part. Just hit enter. Yes, you get the right things. Just scroll down, just copy this again command, just paste, hit enter. Again, copy this particular command, just paste and hit enter. It takes something around 30 to 40 seconds to simply complete. Once it get completed, you can just check my progress and here's your labs and it takes some times to load. तो बेसिकली इन दिस कमांड तुम लोग को टोकन को रिप्लेस करना पड़ेगा। जस्ट पेस्ट एंटर। यहाँ पर जो है हम लोग ने टोकन जो क्रिएट किया था, यहाँ पर आकर के तुम लोग को सिंपली टोकन को रिप्लेस कर देना है। जस्ट पेस्ट एंड जस्ट लुक, जस्ट कॉपी। यहाँ पर जो था एरर आया था, ठीक है। तो सिंपली कॉपी एंड पेस्ट एंड हिट एंटर। डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस दिस पर्टिकुलर जो तुम लोग को रूट में मिला था, यहाँ पर तुम लोग को उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड क्विकली कम बैक एंड जस्ट पेस्ट एंड हिट एंटर। और यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट आईडी में ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये जो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, तुम लोग आकर के क्विकली इसको कर दो चेक माय प्रोग्रेस एंड यहाँ पर होती है हमारी लैब। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस योर टोकन विद द टोकन्स व्हिच वी हैव गॉट हियर अपसाइड। ये जो टोकन हम लोग को मिला था। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट